So find the current in branch PM. Find current branch. तो आपने बोला था कि बस सेम चीजें लगानी है बट नॉट फॉर लूप। इसमें वो चीज नहीं है। अच्छा, वो दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे, इसके बाद करेंगे। अच्छा, और इसमें बीएम ब्रांच आपको करंट करना है। आपको सिस्टम दे दिया उन्होंने, सर्किट बना के। अच्छा, सारे लूप सॉल्व करने पड़ेंगे। So the other question, do we solve all the loops? दो ही हो जाएगा। एक लूप कौन सा होगा? लेफ्ट और एक ए बी एम एन ए बी एम एन ए, ओके। और एक बी सी एच एम बी। उसे कैसे होगा? यहाँ पे हमारे पास उसके आगे के रेजिस्टेंस में करंट और डिवाइड हो रही है। उसके अंदर एक और यहाँ से एक वेरिएबल निकालोगे, उसके बाद फिर एक बार वेरिएबल, तो वेरिएबल्स के वेरिएबल्स बन जाएंगे। Post answer will be terms of epsilon and r. Post नहीं में किया। अच्छा, ये टर्म्स पर। और एक लूप से भी आंसर नहीं हो। तो अगर इस ब्रांच में करंट निकालना है तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे करंट जा रहा है, उसके कुछ यहाँ से अगर आप कुछ करंट शो किया, यहाँ पे आ रहा है और उसके ऊपर डिवाइड होकर बाहर भी जा रहा है, तो एक और वेरिएबल छूट जाता है। इसको इस तरह देखने की कोशिश करो कि अगर नंबर ऑफ लूप्स कम करने हैं, so just look from this side. वो हम सॉल्व करेंगे। Correct. So it means find out equal resistance on this side. On this side, solve for equal resistance, then we get two loops. And it looks simple. So right side. यहाँ से it means from starting, that means find out equal resistance between C and H. Means find out equal resistance. Find equal resistance. Correct resistance between C and H. Between C and H. Basically, this will be R plus 2R3 and Plus R 4R. and then parallel with 4R. 4R at least come 2R. 2R. And 2R plus 2R will become 4R. And then parallel to 4R. Again 2R. Now this becomes simple. Now we have two loops. Here is a loop here. So redraw them. And redraw. VR and then so it's epsilon. Four R. Six epsilon. And then this out. Now we can solve. Drop the loops. Okay, Pranav, you are there? Yes, sir. So now there's a question here. What we're doing. So the question here says find the current in branch PM. So this is the
circuit diagram to it was this will branch B and in this we need to find out current. We are doing based on the Kirchoff law. So if you make loops, then there will be one loop here and as many loops possible here. That will be quite confusing. So that we need to find out, as we said, find equivalent resistance between C and H. C and H के बीच में निकालो resistance. Then become 2R and then we read our circuit here and we are left with only two loops, which will be simple to solve. When that current sorry loop goes from positive terminal to negative terminal, that is plus 10, right? Positive negative minus. Sorry, minus. Because the potential drop is big. Drop. ये minus 1 plus यहाँ पे इस केस में high potential to low potential. Correct. It is going from lower to higher to plus. We can apply Kirchoff law on both the loops, clockwise or anti-clockwise, whatever is okay with you. Did you see the previous recordings, Pranav? Like not really, like not all, but like one or two. I had exams in between, so that's why I got it. Okay, but this topic you must have covered, for example, Kirchoff law. No, sir. Oh, no, we haven't. Because previous couple of classes we have been doing this topic. Now we can make use of Kirchoff law. So we A, B, C, H, M, and then N. We can apply clockwise, anti-clockwise. Let's see यहाँ पे current I जा रहा है और यहाँ पे इस केस में मान लो current यहाँ पे I1 current because I1 का निकाल दो. Question says only this one. इसी पे वेरिएबल लेके चलते हैं जिसको सॉल्व करने में एफर्ट कम लगेगा. तो इसको I1 ले लेते हैं. I1. हाँ भैया. And this will be I minus I1. And this will be I minus I1 here. Yeah. And then solve for it. So loop A, loop with a loop. So loop A, B, N, E. The equations will be, if they are going clockwise, that means will be on one side, we take batteries here, 10 epsilon, other side we take resistances, I into 3 IR here. So 3 IR, and then what this is I1, same direction as the current, we'll say 4 I1R plus 4 I1R, and then battery will be going from negative to positive. So this is negative to positive again here. So again it will be plus 16. So 16 epsilon, it is 16 epsilon is equal to 3 IR plus 4 IR. Yeah. That's all first. And then for the second loop, we have got 2R here. So loop. So you can say loop BC, BC, H, M, B. Now here, going from positive to negative here of this battery, so it will be minus. So it will be minus 6 epsilon, minus 6 epsilon. And then again, current is in the opposite direction, so it will be minus 4 I1R
minus 4I1R and plus 2R into I minus I. Okay? We need to eliminate I. Then we get straight away I1. So I'll simplify the case this will become equal to minus 4I1 and then minus 2I2, so minus 6 I1R plus 2 IR minus 6 epsilon is equal to minus 6 I1R plus 2 IR. And this was then 16 epsilon and 16 epsilon here. Now, why would it be 2IR? R तो 2 put कर दिया ना? हाँ? R की वैल्यू ही तो 2 है, तो R क्यों लेके जाते हैं? R की वैल्यू 2 नहीं है, this is 2R. हर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 4R की फॉर्म होती है. 2R की R की वैल्यू 2R है. अच्छा. R we cannot eliminate. Okay. R is not known. अच्छा. R can be anything. Mm-hmm. So we have to say, we have to take 2R. It's not 2 ohms. Okay. The value is 4R. Mm-hmm. So now solve for this one. Now we got one equation here and then second equation here. Solve using the either equation method. And then you will get I1 is equal to 25 epsilon upon get on solving get I1 is equal to 25 epsilon divided by 25 epsilon. क्या आपका आंसर आना चाहिए 25 epsilon upon 20R. सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या है. Did you understand these equations here? Yes, sir. इसमें तीन अच्छा R के टर्म्स में है. R के टर्म्स में because वेरिएबल्स हमें एप्सिलॉन और R दिए हुए हैं तो R के ही R एंड एप्सिलॉन के टर्म्स में है ना because we are not given any values for epsilon. Small simplified is better than because it will be those to divide that this will be 3 epsilon, this will be minus 3 I1 R and this will be plus IR. So what is the value of I1? I1 is coming to 25 epsilon divided by 3. Okay. 50 to 26. So I1 will be equal to solve these two equations from 1 and 2. और हमें I1 ही निकालना है. I1 निकालना because it has asked to calculate only this current here. We have taken I1 here. उस केस में वेरिएबल वो एलिमिनेट करो जिसके भी जरूरत नहीं है. We wanted only I1, I को एलिमिनेट करते that we got 25. Are you clear now? Yes, sir. So you must get this value I1 is equal to 25 epsilon upon 30R. Did you get it or you're doing it? अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है 1 and 2.
Have you noted down, Pranav? Yes, sir. I will use the board for the next question. How was your midterm paper? Pranav, how was your midterm paper? Also, I had physics today, sir. Hmm? I had physics today. The You MCQ had were very physics? tricky. Yeah. But like the derivations, everything were quite easy. The MCQs were really tough. Okay. But you had derivations in the paper. No? Yes, sir. For Gauss law, all the three for the infinitely wire, the plane sheet, and the spherical shape, all three came for like 2, 3 markers. So can you share the paper in the group so that everybody can see? Okay, sir. I'll do that. And like when you have done your paper is one? Second. Second. After that, share the paper. Okay. Everybody can see the paper. Okay, so now next question is that so here say, 1 and 4 6 4 3 and 1 5 battery 9 volt battery 3 volt battery here. Not like this. And this on. So that is the circuit given. Let's say F. So it says that determine the value of unknown resistance R. Determine value of R such that no current such that no current no current flows through no current flows through no current flows through 4 ohm resistance so that no current flows through 4 ohm resistance. Oh, correct. Okay. That means here what they are trying to say is that this BE के बाद में BE के बीच में 0. BE के बीच में current will be 0. So what does it mean? If the current is 0, that means what do we get to understand here? That B and E are uh, at the same potential input. because there is no current flow. Right. So B and E are at the same potential. So that's one part. And then when we make the loops, make loop 1, loop 2, and here, assume that something that kind of current I is flowing from here. This same current will continue here. Here, current will be 0. Current is 0. Current will be 0. This arm. Means when we take the current IR product here for 4 ohm, it will be 0. But battery will be still there.
When we make the loop, Oh, हाँ, value value is is here. हाँ. So it's here. Now Okay. make the loops and then go. Are you getting the point, Pranav? When we make the loops here, so for this loop, the current through resistance is 0. So I into R will be 0 here, but we still have to take into account battery that we cannot ignore. For both the loops, then make loop 1, loop 2. 1. Take both clockwise or whatever. Okay. Okay, loop, the loop, first loop, A, B, E. हर पूरे सर्किट में सेम करंट ही जा रहा है. Because here, this current is coming as I here. And also here. And this will also go as I because here this current is 0. Do AB, EFA. Now make the equation with fail. So starting from here, so cell will be 9 here because going to be positive 9 volt. क्या है क्या होगा? So direction of current is same as the loop, so that means we can say 1 into pi. So 1 into pi is pi plus again is 1 into pi plus pi, and then 6 volt will be plus to minus, will be minus 6 plus 9. Get I. This I will be equal to how much? I will be equal to 9 minus 6, 3 upon 2. 3 upon 2. Minus 3 upon 2. So minus will be equal to. अब ठीक है उसके ऊपर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा. हाँ मैंने डिफरेंट लिया. Means here, so 9 plus 5 2, so it will be 9 minus 6 will be 3 upon 2, 1.5 MP. 3 upon 2 is equal to 1.5 MP. And now we know I. So we make this loop and we can find out R. Solve for R. So we say loop. Solve for R. So loop. BC. DEB. BC DEB. I is my pata. So we can put up I. So it will be plus 6. So 6 will be equal to I into R. So we can say that's I R. I R. Same direction. And then this is going to be 6 and 3 volt will be plus or minus. 3 volt वाला क्या आएगा? मैं उल्टा दो. You can take anything. So it is plus to minus. But for you it will be minus. Minus 3 plus 6 means R will be equal to 3 upon 6 minus 3 upon 2, 3 upon 1.5. I is 1.5. To be 2 ohms. R will be equal to 2 ohms. Yeah, R is equal to. So R will be equal to. Minus I. 3 pi I equals to R. हाँ 3 pi 1. R की वैल्यू 2 ohms आ गई यहाँ पे. Clear करना? So I couldn't hear you, sir. I couldn't hear you, sir. Are you saying something? I'm saying that did you get this value R is equal to 2 ohms? Yeah, I got it. But equation formation, are you clear or not clear about equation formation? Yes, sir. We do this chapter in our class once. Okay, so you're clear how to formulate the equation, right? Yeah. Yes, sir. Any doubts? Then ask, because we'll do some more questions, and then next class we'll do
Wheatstone Bridge, and then close the chapter during next class. Did you get some question on this law in your question paper? No, sir, for the test, we only had the first two chapters. Okay, first two chapters. Okay. Good. We'll conduct But it, आपके sir. तीन बार है नहीं सर अभी से एक महीने में एक और एग्जाम होगा सर अच्छा हाँ उसमें I think they'll take like first 4 chapters I think I'm not sure. Okay. But then you'll be prepared for that. That's good. Next point it says find the potential difference between A and D. So it says find the potential difference between A and D. Okay. So this case with A and D, this will be F and C. F and C. F and C. Find out potential difference between F and C. Next part is find out potential difference between F and C. Potential difference between F and C. So if you say F and C, so C is same as B. C is same as B. It can be, then we can say it will be nothing but dB minus P. Suppose we say potential difference between F and C, if we say DC minus BB, with DC minus BF. Starting from here, DC minus BF will be same as DC minus BB. Correct? Because B and C are at the same potential. They just connected by single wire. So both of them are at the same potential. तो अगर इस पे पोटेंशियल निकालना तो दोनों में F आएगा ना और C और B चेंज oh sorry F आएगा हाँ तो BB minus B that's correct BB minus BB minus तो इसमें कैसे करेंगे BB minus B निकालेंगे दो पार्ट का तो याद नहीं कैसे करें तो उस केस में जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था जितना ही लगाओ बस उतने पार्ट के हाँ that means we have to apply the rule only for but there is no voltage जब शुरू करें तो पता लगेगा अगर मान लो कि F से E तक जाना हाँ तो जाने का रास्ता क्या है अब हम लूप की बात नहीं करेंगे अच्छा because we are not talking about closed loop now we are just talking about a path oh F E so F से ऐसे जा सकते हैं हाँ यहाँ तक यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं ठीक है ना so उस केस में अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो मिनिमम कंपोनेंट रास्ते में आ रही है उसको लेके उससे कैलकुलेशन हो जाएगी अब इस रास्ते में कितने कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ से जाओगे एक तो हैवी आ रही है दो और एक तीन कंपोनेंट यहाँ से जाओगे ओनली दो कंपोनेंट आ रहे हैं so to be simpler go by this rule okay and then we say so when we were making the equation we started with that sigma delta B so the law delta B equal to 0 yeah because we were making a loop yeah and then we said from here we came out sigma epsilon equals to delta yeah sigma sorry sigma IR ठीक है ना तो ये जीरो इसलिए आ सकता है ओके तो हम यहाँ पे लूप क्लोज कर रहे हैं अगर लूप क्लोज नहीं करें तो उस केस में क्या मिलेगा we get a potential difference that means if we say here sigma epsilon minus sigma IR will be equal to potential difference this will be equal to potential difference between atoms. Sigma epsilon minus sigma IR
will be equal to, now here it was 0. It was going to be 0 here. But here it will not be 0. It will be potential difference between the 2 points. If they are just going from one point to another point and they are not closing the loop. Okay? Now we have to follow this. अब इस केस में क्या है? अगर ये लूप लेके चल रहे हो, इसमें बैटरी को कुछ नहीं है। हमारी इक्वेशन क्या बनी? ओनली सिग्मा आई बाय 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना? तो सिग्मा आई क्या था? We got 2 ohms here and 1.5 ampere here. The sigma will be minus and then it will be 2. 1 plus 1 is 2 and then 2 ohms into 1.5 will be the I didn't get this. Sigma is 2.2 and 1.5 सिग्मा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मिलेगा सॉरी इस रूप में सिग्मा स्ट्रॉन्ग है नहीं हाँ यहाँ पे बैटरी नहीं है हाँ उसकी वजह से जीरो ले ली अच्छा ओके हाँ हाँ ठीक है एंड दिस इज सिग्मा आईआर ओके स्टूडेंट आईआर कितना है 1 और 1 2 ओम्स और करंट हमारे पास 1.5 है I1 निकाल सकते हैं समझ गए नाउ दिस बिकम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू V T minus F. So it means that minus 3 volt, that means now this is at a higher potential. Jैसे BB minus DX negative, that means BB is at lower potential as compared to BF. हाँ. Minus 3 volt. ठीक है? अब अगर मान लो कि ये BF will be higher. BF will be high. So BF is at a higher potential than B as compared to B. ठीक है ना? अब अगर मान लो ये रूट लेके चलते हैं, यहाँ वाला रूट लेके, for the sake of calculation, समझने के लिए, अगर ये रूट लेके चलेंगे तो उसमें क्या आएगा? हमारे पास सिग्मा स्टॉक आएगा because now we got 2 batteries here. यहाँ से यहाँ पे जब जा रहे हैं, तो we are getting 9 volt will be with a negative sign. negative sign because loop will be minus 9 volt with it. We'll say let's write again sigma epsilon minus sigma IR is equal to potential. Sigma epsilon हमारे पास हो गया minus 9 and this will be plus 6. यहाँ से ऊपर जा रहे हैं plus 6 plus 6 minus sigma IR यहाँ करंट क्या 0 this will be 0 here. Yeah. And this will be. So there is no limit. Because here we said that there is 0. This was the assumption that is 0. Now it will become equal to minus 3. Once again, equal to potential difference. Okay? So we can take any route. But इधर कैसे रहती है? minus 3V is equal to BB minus minus 2 to 1. अच्छा B is gold. अच्छा उधर भी minus 3 gold लियो. Gold minus gold. अच्छा उसको भी बना दें. minus 3. मुझे लगा वेरिएबल. और अगर ये रूट लेके चलो, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक हो, करके पूरी के डिस्टेंस मान लो कौन सा से? अगर F से लेके E पे आओ, E से फिर D और E से फिर C. अच्छा let's see we get the same answer must be the same answer तो इसमें फिर लूप का क्या करेंगे लूप नहीं उस केस में अगेन आपको यहां से जैसे F और C के बीच में लूप तो है नहीं so we starting from a point and we get a point उस केस में rule will be same it is going from plus to minus on the battery side it will be minus 9 volt just यहाँ पे that I understand but what about resistor अगर R के वैल्यू हमारे पास है R के वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड no जैसे होता है कि लूप और करंट का डायरेक्शन उल्टा होने से माइनस होता है सेम लॉजिकल भी है ऐसे लूप तो है बट अगेन ये टेकन हियर कि उस केस में करंट हमारे यहाँ जा रहा है बट अब रास्ता हमारा ये है तो देयर कंपोनेंट अच्छा हम F to C रास्ता है ओके तो जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते का डायरेक्शन क्या है गॉट इट वो अप्लाई करना so it will be minus 9 plus 3
it will be -9 plus 3. हाँ. So that means -9, -9 plus 3. ये हमारा सिग्मा एप्सिलॉन हो गया माइनस सिग्मा आई आर. तो माइनस आएगा. सो माइनस यहाँ पे कितना है आई की वैल्यू हमारे पास 1.5 है एंड आर एस टू सो माइनस 1.5 into RS2. We get in here -3 plus 3 -6 plus 3 minus 3. हाँ. Good. That's it. So -9 plus 3 minus 6. 6. And minus 1 minus 3 minus 3. So it's something wrong. So please say -9 plus the minus क्या है? Okay. No, -1.5 होगा. Huh? -1.5. Minus 1.5. Correct. So minus 1.5. That's perfect. Now it's going to be -3. -3. Correct. So we minus 1.5. Yeah. ठीक है? कोई समझ में आया? This point when we are doing, suppose we do not have suppose they ask you to calculate potential difference between 2 points. So we cannot take a loop because loop will be closed loop, but here we do not have a closed loop. So we'll apply the same laws and then we say this is the potential difference between 2 points. Okay, sir. Because here, when we started a problem, we said sigma delta V is equal to 0. And this was a closed loop because if we start from a point and come back to the same point, potential difference is 0. But now, instead of concluding the loop, we are coming somewhere in between. We cannot say potential sigma potential difference equal to 0. That will be the potential difference between the 2 points. Yeah. So note करो because अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. You can note down all 3 routes जिसमें कि डाउट नहीं है. The thing is, मैं जब इसको पढ़ रहा था, मुझे पेपर में आ रहा है. जो the problem is coming is कि जहाँ से पढ़ रहा हूँ वो अलग तरीके से कर. और the thing is पढ़ रहा हूँ अलग तरीके से, फिर बुक में कर रहा हूँ वो भी अलग तरीके से. हाँ. तो फिर प्रैक्टिस में क्या कर रहा हूँ बस आंसर चेक करके कर रहा हूँ. उस केस में you follow only one method. हाँ, but if my answer is not correct coming कर रहे हूँ, how would I cross check क्या गलत हो रहा है? क्योंकि तो वैसा किया नहीं. तो आंसर तो आपके पास किसी भी मेथड से कर रहा हूँ आंसर तो आपके पास होगा. अब जैसे हाँ आंसर मेरा अगर सही आ गया वेरी गुड, बट अगर आंसर सही नहीं आ रहा then how would I cross check that? एक ही मेथड फॉलो करो. कंफ्यूजन सब बार-बार इसी में होता है जब आप वही डिफरेंट. अभी तो ठीक है. I find this method is very convenient. हाँ, एक साइड पूरा बैटरी पे लेंगे. हाँ. एक साइड पूरा रेजिस्टेंस पे. इसमें रूट भी तो जैसे कि याद है. Now this was for the root. For the root. F-A-D. F-A-D.
So root FAB. This was for the root FAB. And this calculation was for the root FEB. This was for root FEB. FEB and this was for the root FEB2. FEB. Clear? So, let's do. Clear, Pranav? Yes, sir. Have you noted down everything here? Yeah. Good. Clear? Um, we are- Plus minus minus part one. Yeah. Very interesting. Here it says assuming point A to be at zero potential. Assuming A B at zero potential. A B at zero potential. Use Kirchoff law potential at P. Assuming A to be at zero potential, find out potential at P. Potential, find out potential at P.
Assuming A to be at zero potential, find out potential. इसमें करंट की वैल्यू चाहिए बट आर नहीं कैन वी फाइंड आउट अब अगर बी पे पोटेंशियल निकालना तो करंट की वैल्यू कितनी है उस केस में ए तो बता दिया जीरो है लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सेकंड, अगर हम ए से बी का रास्ता लेके कर लें तो वो बी का पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि ये तो जीरो है। हाँ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा हाँ तो ए AB minus BA करना पड़ेगा हाँ then you can say it is zero वही correct so you find out AB minus BA That then will put be BA is equal to zero हाँ वही you need to find हाँ out is BB minus BA निकाल लेते हैं and then put BA as zero you'll get perfect तो उसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से आगे तक जाने के लिए ये करंट हमें पता है यहाँ पे 1 पे जा रहा है इसका ये भी पता है क्या नहीं पता है R1 नहीं पता हाँ पहले आप सॉल्व द लूप सॉल्व कर सकते हो या फिर अगर आप यहां से जाओ ACDB जाओ उसके में क्या होगा हमारे पास वेरिएबल्स कम हो जाएंगे वेरिएबल्स जैसे कि अननोन वैल्यूज कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 भी पता है ये भी पता है अब अगर करंट यहाँ पे 2 एम्पीयर जा रही है तो 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर हाँ अब दूसरे सेट पर जो सॉल्व अगर आप ACDB रूट लेके सॉल्व करो एक रूट ACDB We need to find out BB minus BA and put B is equal to 0. Then we get potential BB. Clear for now? Yes, sir. So could you send a picture of this? I can't see the one of the values properly. You can't see what? The circuit. One of the values properly, sir. So next to point D, sir, what is that? It's 2 ampere. Okay. Assuming, yes, assuming A. No, sir. I can't read one of the points in the diagram. Next to Two point D. amperes. 2 ampere, 2 ampere. This is 2 ampere. Okay. 2 ampere. 2 ampere and 1 ampere. Resistor को वापस बोल how do we calculate this? Now उस केस में अब आप अगर ऐसे जा रहे हो हाँ तो करंट हमारा यहाँ आ रहा है तो -2 आया minus minus 2 correct. सिग्मा ई पहले बनाना सिग्मा ई क्या हो जाएगा इसका भी +1 वोल्ट है सिग्मा ई में पहले +1 वोल्ट है क्रॉस ठीक है ना भी +1 for sigma e for and here the current is in the opposite direction current वाले पे और मैं पहले बैटरी लेकर और यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस इज टू बी +1 -2 here. This is our sigma epsilon part, battery part, +1 -2. Yeah. And then sigma r minus sigma r. Sigma r will be 2 into 1, what will be opposite direction will be -2 here. Then because here direction हमारा ये है रूट का डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन ये है that now it becomes -2 this will be equal to +1 -2 +2 will be 1 1 that is the
potential adjustment. That means we get BB minus BA is equal to BB minus BA equal to 1 volt. BA is 0, so BB is equal to BB equal to. Yeah. अगर इसमें एक चीज ये देखने की कोशिश करो, ये सेट BA is 0. That means we can instead of saying BC की वैल्यू कितनी है? 1 volt. 1 volt. Because here potential difference between A is 1 volt. So we can instead of say BC is equal to 1 volt here. ठीक है ना? वैसे भी आप कर सकते हैं. या फिर इसमें R1 की वैल्यू निकालो. कोई पूरी मेथड है. Using the loop because R1 we can easily find out. अगला क्वेश्चन, अगर बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे हो जाते हैं तो वो क्या A to C माइनस में होगा? उल्टे मतलब यहाँ पे लाइक पॉजिटिव लेफ्ट में और नेगेटिव राइट में. हाँ तो उसके एक में this was at a lower potential. हाँ. अभी क्या this at a higher potential. Then it is 1 volt. हाँ. What if it would be in the lower potential? That will be minus 1 volt. Right. एक और मतलब था कि R1 आपने सॉल्व कर लिया, करंट आपको पता है और BC आपको पता है यहाँ पे 1 है. 1. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस. That means here, this BC we can say is at 1 volt. BC, so BC is equal to 1 volt. And यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे स्क्वायर पे पता है. You can find out resistance value here R1. तो फिर कैसे पता है? Oh, because 1 हाँ ठीक है. ये इस वैल्यू पे जा रहा है. हाँ. ये पूरा वैल्यू पे जा रहा है. हाँ. उसके इसमें आपको बस R1 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है 2 से. And then you get BB minus BC. बट उसके लिए लूप सॉल्व करना है. हाँ, लूप सॉल्व. So very similar for them. But this is the simplest method अगर आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. इस तरह के मेथड्स आपको पढ़ाए थे जो instead of loop suppose we take 2 points and find out potential difference. What, sir? In your school have they done these kind of questions? अगर दो No, points sir. के We're बीच- still on we're still doing those loops with coil. Like we're still on Wheatstone Bridge actually. अच्छा. Okay. Good. एक तरह क्वेश्चन और भी आते हैं तो मैं आपको Okay, I'll give you one question as a homework. I will post in the group. Okay. But besides that, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि कंफ्यूज नहीं होना है उसमें. And we have to take some assumption and then proceed. अगर आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया, रेजिस्टेंस की something like this. उसके अलावा कुछ और दे दिया इसमें यहाँ पे और रेजिस्टेंस दे दिया, तो उल्टा सीधा सर्किट दे दिया. And at this set, we find out equivalent resistance between, let's say, point A and B. Yeah. तो सिंपल इसको भी छोड़िए, but suppose we complex circuit ले लिया. उस केस में solve कैसे करोगे? उस केस में assume, you have to assume that point A and B, for example, point A, B, then we assume that there is a battery connected here. You say that we assume a battery is connected between A and B. Okay. उसका कोई वैल्यू आपने assumption ले लिया, उसका वैल्यू epsilon. And then use Kirchoff law to solve.
For that case, this part will get cancelled in the equations. Because if you are able to find out this current here, then applying Ohm's law, you can find out the distance. So there will be 3 loops. There can be multiple loops also. Okay. But मुझे तो आपको लूप को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपने एज्यूम करें यहाँ पे एप्सिलॉन है, कोई वोल्टेज के एप्सिलॉन है, और ये करंट I मान लिया, then you will take the ratio. So R equal to S will be battery value divided by I. Then you can find out equal to S will be 2 pound. सर्किट को कुछ दिखाया, जस्ट सेट एक सर्किट बनाते हैं, इसके पीछे एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कोशिश करा दूंगा, तो you can do it. Okay, so we're going to stop here for now. So I'll post a question in the group and do that Okay, sir. question at home. Yes, sir. Of the question which will confuse you a little bit, but when you look at carefully, it's a simple question. Okay, sir. Okay, let me stop here. Yeah. Okay, take care. Yes. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye. So in some questions, this is a first day